Hello, Bingan Size Hornbill TV laga Morning Pulse Bulletin. Ajila laga nagamis kuporenika janadi ase. Calcutta High Court bra law student Sharmista Banoli laga interim bail plea korea do reject korise. Etu laga opore advocate MD Samimuddin bra kushigi court bra state ke case diary produce kuro direct korise. Kundu bra 5 June day bail hearing do thagibo. Etu laga same act garne aro fresh FIR na kurobole lage koina court bra kuise. ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को केस डायरी प्रोड्यूस करने के लिए ताकि उसका बेल का जो सुनवाई हो 5 तारीख को हो सके। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया स्टेट को कि उसका जो करेक्शनल होम में बेसिक एमिनिटीज नहीं मिल रहा है उसको देखा जाए, उसको बेसिक एमिनिटीज सुविधा उसको दिया जाए। और ऑनरेबल हाई कोर्ट ये भी बोला है कि सब्सिक्वेंट जितना भी एफआईआर है जो शर्मिष्ठा के अगेंस्ट में लॉन्च किए हुए हैं या इन सेम कॉज ऑफ एक्शन अगर कोई फ्रेश एफआईआर ताकि ना हो, इसका भी एक तो डायरेक्शन दिया है एंड सब्सिक्वेंट एफआईआर टू बी स्टॉल्ड। देखिए, द मैटर इज सब जुडिस। ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑलरेडी डायरेक्शन दिया है स्टेट को पूरा चीज ठटोल के देखने के लिए और उनका जो बेसिक एमिनिटीज है वो सब फुलफिल किया जाए। तो अभी वो स्टेट का ऊपर है और कल एक तो रिपोर्ट सबमिट करेंगे आपका जेल सुपर लर्नेड CJM अलीपुर का पास रिगार्डिंग दिस फैसिलिटीज बीइंग अवेल्ड बाय शर्मिष्ठा और नॉट। 5 तारीख को है। हम लोग आशा कर रहे हैं कि उस दिन शायद हम लोग को बेल मिल जाए। 10:30 बजे से कोर्ट शुरू होता है। मैटर ऑन टॉप रहेगा। Congress MP Rahul Gandhi bra Madhya Pradesh te jaigina senior party leaders kan go lokpai na kota gura moi goshiki atani bra Chinese schools kan India de ahina pikai idu bra atani aro Ambani kan poisa do baise holbi India youth noina Chinese youth kan hi kam paise। अदानी बनाता क्या है? अदानी पूरा का पूरा चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचता है। तो अदानी पैसे बनाता है, अंबानी पैसे बनाता है और चाइना अपना माल हिंदुस्तान में बेचता है। यह फोन जो है यह अदानी अंबानी जैसे लोग बेचते हैं हिंदुस्तान में, मगर इस फोन से चाइना के युवा को रोजगार मिलता है, हिंदुस्तान के युवा को रोजगार नहीं मिलता है। वो सब कुछ बनाते हैं, शर्ट, पैंट, मोबाइल फोन, सोलर पैनल, और यहां पे बेरोजगारी फैलती जा रही है। जहां भी देखो, आप किसी भी युवा से पूछो भैया क्या करते हो, कुछ नहीं करते हैं। क्या काम करते हो, नहीं कुछ नहीं करते हैं। यह हिंदुस्तान की सच्चाई है। Country alak te jabiche JDU MB Sanjay Kumar Chabra lead Korea all party delegation jagali Tuesday India de wapas ahi bole thagishe idu homoi taken khushi jonashi ki taken bishi satisfied hoina wapas jaise aro Indian government pra taken ge kam dia do bishi bhag pariya gushe BJP MB Aparijita Sarangi pra khushi taken pansta country de 13 din do bishi khushi hoina jaise taken Japan, Republic of Korea, Indonesia, Singapore aro Malaysia de jaise। I would say that I feel very much enriched at the end of 13 days of massive touring in 5 countries. We started the touring from 21st of May and today is 3rd of June and we are heading towards India. Definitely going to India is very much welcome for all of us. We are actually looking forward to going to our motherland. But I would definitely say that the purpose with which we had come has been fulfilled to my mind. We started from Japan, then thereafter we went to the Republic of Korea, then from there to Indonesia, to Singapore and then to Malaysia. Of course, the response of the governments in 5 different countries were different from one another, I must say. We had come here with a purpose. We wanted to convey to the countries, our countries stand on cross-border terrorism. We wanted to tell them that there was zero tolerance for terrorism. We wanted to tell them that Pakistan has been nurturing, promoting and nourishing terrorism and therefore all the countries with whom we had interaction were requested to put in a word to Pakistan and tell them that this has to stop. Pakistan has been a habitual offender. It has been creating problems for all of us over a period of time and that is why we had come and we met cross-section of people. We met the bureaucrats,
we met the politicians, we met the think tanks, we met the Indian diaspora. So I think we spoke to a couple of people, couple of societies, couple of associations, and we are going back very much satisfied. I think the job that had been entrusted to us by the Government of India has been accomplished to a great extent. Thank you. Former Indian Ambassador to France, Dr. Mohan Kumar Brabi Kushe, Sop Manubi terrorism ke condemn Korea, aro India bra action uthage bhi support diase. Thank you very much for asking me that question. I think we've just concluded the visit of these 5 countries, starting from Japan, South Korea, Singapore, Indonesia and Malaysia. And I can confidently say the following, which is that I think the fact that it was an all-party delegation or a multi-party delegation was appreciated by all our interlocutors. It was accepted that India spoke in one voice. So that was the first takeaway. The second takeaway is, I think, there was unanimous and universal condemnation of terrorism, and there was sympathy for both India's action, support for India's action, and condolences for the victims. I think India's military reaction to the horrific terrorist attacks, I think, was understood in its right context, and I think our restraint was also praised. A ceasefire has come into effect. The fact that we accepted the ceasefire when Pakistan offered the ceasefire was also appreciated. We spoke to a wide cross-section of people in all these countries, beginning with ministers, deputy ministers, speakers of parliament, officials, but also academia, also think tanks and press interactions. And in all those interactions, I think the main thing that came across was that peace and ceasefire should prevail. We have conveyed clearly to them that it is not our choice to have a war, and that we were merely responding to the horrific terrorist attacks. We explained the new security doctrine put forward by Prime Minister Modi in his speech, which is that we are going to react to terrorist attacks as if it was an act of war. We also said to them, to all the interlocutors, that really we are not going to make a distinction between acts of terror and the country that promotes terrorism. So on the whole, we've been able to present a united India, a strong India, and an India that propagates zero tolerance for terrorism. Thank you. TMK MP Kanimoji Bra lead Korea all party delegation wapasing de punchina thagya humai AABMB Ashok Kumar Mittal Ragushiki Taikan Bra PM Moti aro India laga side bra ekta message dina ahishe India to peace loving nation ase aro mukandu Vasudhaiva Kutumbakam ke biswas kore guna. हम जैसा कि आप जानते हैं 5 देश जिसमें रशिया है, स्पेन है, ग्रीस है, स्लोवेनिया है, लातवी है की यात्रा करके वापस लौट रहे हैं। और इस दौरान हम वहाँ के फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स और मंत्रियों से मिले, हम वहाँ के पार्लियामेंटेरियन से मिले, हम वहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग से मिले, हम वहाँ के मीडिया से मिले, हम वहाँ के उन लोगों से मिले जो उग्रवाद से पीड़ित लोग हैं, उनकी संस्थाएं हैं, हम अपने भारतीय समुदाय के लोगों से मिले और हमने एक ही संदेशा दिया कि भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का कि हम शांति प्रिय हैं, हम वासुदेव कुटुंबकम पूरे विश्व का कल्याण हो उसमें विश्वास रखते हैं। लेकिन यदि कोई देश हम पर आंख दिखाएगा, हमारे यहाँ उग्रवाद भेजेगा, हमारे नागरिकों की हत्या करेगा, हमारे देश को अस्थिर करने की कोशिश करेगा, तो उससे कोई समझौता नहीं होगा। उसका हम जवाब देंगे और पूरी सख्ती से जवाब देंगे। और यही हमने किया जब उन्होंने हमारे 26 नागरिकों की पहलगाम में हत्या की। हमने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से 9 उग्रवादी ठिकानों को तहस नहस किया, नष्ट कर दिया और इतनी सटीक तरीके से किया कि जिस कमरे में, जिस बिल्डिंग में वो रहते थे उसी का नुकसान हुआ, आसपास कोई नुकसान नहीं हुआ, सिविल पब्लिक का कोई नुकसान नहीं हुआ, उनके इवन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी हमने कोई ठेस नहीं पहुंचाई, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन जब पाकिस्तान ने युद्ध शुरू कर दिया, हमने उसका जवाब दिया। भारत समर्थ है, भारत में सामरिक शक्ति है, हमने उसका जवाब दिया। यदि वो हमें परमाणु युद्ध की धमकी देता है तो भारत में ये भी समर्थ है कि हम उनके देश में जाके उनके देश में उनके परमाणु ठिकानों को ध्वस्त कर सके,
परमाणु बम को उनके वहीं फोड़ पाए, ये भी भारत की सामर्थ्य है। लेकिन भारत पहल नहीं करेगा, कभी भी पहल नहीं करेगा, लेकिन अपनी सुरक्षा से समझौता भी नहीं करेगा। तो ये जो उग्रवाद की लड़ाई है, जो भारत अपने लिए तो लड़ रहा है लेकिन पूरे विश्व के लिए भी लड़ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पूरे विश्व में उग्रवाद फैलाता है, पूरे विश्व में, चाहे वो 9/11 है, चाहे वो पेरिस बम्बिंग है, चाहे लंदन बम्बिंग है, पूरे विश्व में फैलाता है। और उस जो हम भारत पूरे उग्रवाद को दूर करने की लड़ाई लड़ रहा है, विश्व के लिए हमें आपका साथ चाहिए। और सभी सरकारों ने, सभी पार्लियामेंटेरियंस ने, सभी बुद्धिजीवी लोगों ने हमें उसमें खुल के साथ देने का वायदा किया, खुल के हमें समर्थन दिया। और विश्व के जो फोरम होते हैं अलग अलग, चाहे वो UN सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन है, उसमें भारत के पक्ष को मजबूती से रख के और उसका समर्थन करने का वायदा किया। आगे क्या प्लानिंग की गई है, आगे को लेकर कोई योजना भी तैयार की गई है, क्या कोई मीटिंग भी तय की गई, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री को भी इसकी रिपोर्ट है। हाँ, अभी हमें 5 तारीख को सुबह माननीय विदेश मंत्री से हमारी मुलाकात है और हम उनको बताएंगे जो जो हमने इसमें हासिल किया, भारत की क्या क्या इसमें जीत हुई। उसके बाद जैसे भी आगे हमें आदेश दिया जाएगा, कुछ भी करना है तो हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। सर, 16 पार्टियों ने मिलकर एक लेटर प्रधानमंत्री जी को लिखा है, संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। इसके साथ ही रामगोपाल यादव का एक बयान आया है कि सभी को ये भी पता चलना चाहिए कि कितने देश भारत के समर्थन में है। उन्होंने एक सवाल ये खड़ा किया कि देखा हमने कि भारत के समर्थन में कोई खुलकर देश सामने नहीं आया है। मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, क्योंकि मैं तो फ्लाइट में था। लेकिन देखिए, विपक्ष, हम भी विपक्ष में हैं, हमने अपनी मांग रखी है, बाकी ये सरकार देखेगी कि सरकार हमारी इस मांग को स्वीकार करती है नहीं करती। ये सरकार का अपना हक है, तो उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली लगा CM रेखा गुप्ता प्रति सिरिगुशी आगे थागा आम आदमी पार्टी लगा गवर्नमेंट प्रा करी लगा ओट इवन सिस्टम तालियादो दिल्ली मनुखन के हरास करा लगा से टाइगुशी जोडी फैमिली एकटा कार एकटा एकला थगिले काम गुरले पिछे दिक्कत हो जाए। दिल्ली CM प्रा रुचनाशे टाकन ग्रीन दिल्ली लिमिटेड प्लांटेशन काम डांगोर करले से एक पेट मां के नाम लगा कैंपेन हिसाब दे टाइकन जून 5 डे शुरू करले से और 70 लाख सैपलिंग्स इडू साउथ थाले बोले टारगेट करे से। ये दिल्ली के लोगों को परेशान करने जैसा है। यदि किसी परिवार के पास एक गाड़ी है तो क्या वो घर से नहीं निकलेगा? आपको बहुत सारी चीजें दिल्ली की जनता की सुविधाओं को ध्यान में रख के करना पड़ेगा, जो करने वाले काम है। डस्ट को खत्म करना, अब मैंने बताया ना कि साल में 2 महीने केवल आप अगर मशीनें चलाओगे वाटर स्प्रिंकलर, तो कहाँ से डस्ट मिटिगेशन होगा? तो वो ब्राउन एरिया को खत्म करना, डस्ट मिटिगेशन करना, मशीनें पूरे साल भर काम करें, ये इसको करें करके। और हरित दिल्ली के लिए हमें जो करना होगा, एक व्यापक स्तर पे प्लांटेशन का काम, इससे पहले की सरकारों ने कभी प्लांटेशन पे उस प्रकार से ना जोर दिया। और इतना सुंदर ड्राइव जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पेड़ माँ के नाम जो शुरू किया, दिल्ली सरकार ने कभी उसे सपोर्ट नहीं किया था। हम 5 तारीख से दिल्ली में इस पूरे अभियान की शुरुआत कर रहे हैं कि हम भी, हमारे जितने संस्थान हैं, जितने स्कूल हैं, जितने इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारी बिल्डिंग है, सब पूरी टीम मिलकर के एक पेड़ माँ के नाम पूरी दिल्ली में इस आह्वान को हम करेंगे। और लगभग 61 लाख से अधिक हमारा पेड़ लगाने का, मतलब इसको 70 का टारगेट लिया हमने, 70 लाख पेड़ हमें पूरी दिल्ली में इस वर्ष लगाने हैं। और इस पूरी डस्ट मिटिगेशन की लड़ाई में हम सब समाज के साथ, सरकार के साथ, सभी लोगों के साथ मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। हमारा ध्येय ये है कि दिल्ली को बेहतर हवा मिले, दिल्ली की आबो हवा अच्छी हो, लोगों का दिल दिल्ली में लगे, लोग बाहर जाने की बजाय दिल्ली में रहना पसंद करें। और पर्यावरण दिवस पे Child Welfare Committee bra jigushigi former pastor Robert Kikon laga alleged sexual assault victims kan idabi compensation apaina asegushe. Child Welfare Committee bra gushe Victim Compensation Act laga niche compensation to District Legal Services Authority ke mangigina ase holibi itiata victims kan compensation apaina asegushe. Jani bashi duida victims to traumatized hoina school bra drop out hoina ase gushe. IP details ho. In regard to many cases that has occurred in the last year in terms of minors, be it sexual assault, which very
this case that we've seen is of the Pastor Robert Kicon case as well, and there are many more also. So, do these victims of sexual assault, how long does it take for them to get compensated? And has the victims, because there are multiple victims supposedly, allegedly, multiple victims of former Pastor Robert Kicon. So, have they been compensated? So far, no, because we have also forwarded for compensation, seeking for victim compensation under the Victim Compensation Act to the District Legal Services Authority. And from the information what we received was that they have already forwarded to the concerned department, that is the Relief and Rehabilitation Department. But the victims are yet to receive the compensated money which has been given to them. And why is there a delay from, is it from the center that comes in or the state government that has to initiate this process? I think that question has to be put to the concerned authority, that is the Relief and Rehabilitation Department. I think there is a separate department who is handling this. So I am not aware from where the fund comes, but then it will be more appropriate if you can ask them. So it's been quite some time. Are the children in good care right now, and are they also in counseling, or what is the status of their mental well-being? So far, we have been providing counseling to the children, to the victims, and yes, because of this trauma, like some of the victims have already, 2 of them have already dropped out from school. And some are still continuing with their education, and yes, we are facing problem, and we will be happy if the concerned authority would release the compensation amount at the earliest, so that we could use it for their rehabilitation. In regard to this, the children, the victims were all at CCIs, child care institutes, and we can see this happening a lot in our state, where Bachahan Bahar Ravishi, alag state, alag district Ravishi, Dimapur, and then they come as relatives, but they end up getting abused, physically abused a lot. We have heard so many stories from different districts in Abuja. So is there a law for this, to keep a check on this? And is there another, is the same child helpline number that we can call 1098? And if so, what are the implications for such cases for the abuser? See, just for your information, like under Tumogidima district, we have around like 7 CCIs, Child Care Institute. So those registered homes are being monitored by this office. So, we have this inspection team. So time to time we go for inspection. Even the Child Welfare Committee, we go time to time for inspection. So from these registered homes, we have not received such kind of cases so far. But that incident that which happened, unfortunately, was unregistered home at that time. And but yes, that said home is also now under the process. And yes, very soon they'll be registering. And another thing is that with regard to what you're questioning is that, yes, we have received a lot of cases that children are being trafficked from various districts or from other districts, and in the name of education, in the name of foster care. But we also, and like since they are being abused, they keep running away from home, and they were rescued by some concerned citizen. Thereafter, like through Child Helpline, they have been produced before the committee. And on looking into the matter, some, like, we have faced so much difficulties also, because those are related to not only like interstate, but it becomes inter-country also. So we just want to educate the public also, like not to take it lightly, because in the name of education, if you want to give foster care also, it has to be done through proper channel. For example, the child has to come from another district, say from Tueng Sang to Dimapur. So even Tueng Sang, they have their own child welfare committee. So if you want to send the children for foster care to Dimapur, like through the child welfare committee Tueng Sang, they inform the
Chumogidima, for example, the child is supposed to stay in Chumogidima. Then, since if the foster families from Chumogidima, they can through the Tuengsang Child Welfare Committee, they can inform the Child Welfare Committee, Chumogidima. Chumogidima will go and do the home verification, will see whether it is a fit place for the child to be kept or not, and after ascertaining all that, we inform our counterpart. Then if the child, and if if done through the proper channel, like it will be in the best interest of the child, because there's less chances of the child being abused also. So like if the public is aware about that, it will be very helpful, because like I said earlier, we have all the system in place, the child services is in place, but the public are not making use of it. And therefore we also want to educate the public that in every district we have all the offices, the DCP office is already established, and all the committees, everything is in place. So if at all you want to send the children out of your district, out of the village, please come through proper channel, so that we don't have to face such kind of cases, because we have received especially a lot of such kind of cases. Public when it comes to juvenile cases, identity reveal because it's against the law, but the public are like reveal offender so public like side presence that when it comes to cases, minor cases, identity, so supplementing, even adults also, if you can just sensitize, no matter what the crime, we are not supposed to reveal identity. Can you just, because we do get a lot of comments, if they have committed the crime, why hiding their face? Be it minor or adult. So can you just sensitize it? See, regarding the minors, Mohando Inia Purity as per the JJ Act now, Mohando, the thing is why we maintain the privacy is that like Mohan Tapangetu, we don't consider them as a criminal. To tai offense kurigina thagisha kulibi, we give an opportunity for the child to reform, so that the child will go back into the society as a reformed person. Na olibi taigi to moitahan taigi expose kurisha kule bahar huli la thagabi, it will cause mental trauma. Na aro taila itu taila future itu tan sok itu affect. So the reason lawmakers can be they have done it in the best interest of the child. Or the child cases can do case after few years after the matter appeal after a particular period of time the case itself is destroyed. File can destroy offenders we don't keep the record. We destroy all the record. That is for the best interest of the child. Even for the adults na, say for example like the moment an offense is committed we all think like this person has done wrong, but until unless proven guilty by the court, we cannot say that the person is an accused. We call them an trial prisoner, so like court pratai ke saza digina trial sob kurigina o tai tu gulti hoise man saza kaise man fine dese man ilia koratak, we cannot say that the person is guilty, right? Because the person is yet to be tried. So even though like manu crime kurbi no kurbi, we all have our own human rights, and then that is why even an accused person like cannot be convicted without having a counsel. Na ito karne government primary security legal counsel kan ito kan provide ko na tayo defend public dito. So just because a person has committed an offense doesn't mean the person has lost like tayo human rights to nai na tayo to manuno hindi nga binapabi mo lagi. And then regarding like disclosing the identity of the victims kan to mohan inyala cases kan to adult kan ho siguro, especially sexual assault victims and all to just ito takan na ito overall well-being karni, because it's not very comfortable for everyone. Like of course public can to jani puli mon thagibo pare na holibi, we have to maintain the privacy also. Ina kurina para tak to ito kan diman jani pule nagurlibi bhala se guni to be koi diya. Since we are also our district is quite new, so last year of October we have created this unit under Chumogidima district. So time and time again we'll be sensitizing the public, the media fraternity for the betterment of the. Actually, our department, we are working for the care and protection of children. So, in the future also we'll be interacting with you. Thank you. Ida ni mana se side ke bi horn gel TV.